the question reads, what can be the maximum number of digit in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform division to check your answer. That means what? If you divide 1 by 17, after how many digits the digits will reoccur? Let us start and 1 divided by 17. 1 divided by 17. See here, I'll take a decimal point. 10 is less than 17. I'll take one more 0 here. So this becomes 17 5s are 85. So the remainder is 15. I'll make it here 150. 150 I'll make it. Then again let us see 17 8s are 8 7s are 56. 8 7s are 56, carry 5. 8 1s are 8 plus 5 is 13. So 136. The remainder is 14. I'll make it as 140. Now 140, if I have to get it again, I can get this by 8. 17 8s are 136. So the remainder is 4. That means 40. 17 2s are 34. So if 17 2s are 34, then I am going to get here 6. Then this I'll take it as 60. 17 3s are 51. Carry 9. I'll make it as 90. Now 17 5s are 85. So the remainder is 50. The remainder is 17 5s are 85, 5, 15. That means 17 2s are 50 is there. So 17 2s are 34. So I will get here 16. 60 if I have to get. 160 if I have to get. Let us see what we can get. See here, 17 8s are we got 136. 17 9s are we will try. 17 9s are means how much? 9 7s are 63. Carry 6. 9 1s are 9 plus 5 is 15. So 153. So this I'll get 70. 70 again, by which digit it is divisible? Let us see. 17 4s are 68. So 68 means again remainder is 2. So 17 then 20. 17 1s are 17. So carry is 3. So 30 I will make it. Again 17 1s are 17. That means carry 13. Carry 13. So I'll make it 130. 130. 130 फिर कितनी बार जाएगा? Let us see here. तो देखिए 17 6 जा 10, 17 7 जा आप लोगे तो 17 7 जा 7 7 जा 14 and 119. So you will get here 11. 11 means 110 you are going to get. 110 फिर कितनी बार जाएगा? We have to see. तो 17 6 जा 102. 17 6 जा 102. So carry 8. That means 80 आएगा. 80 आएगा तो अगेन कौन से टेबल में जाएगा? वी हैव टू चेक इट आउट. 17 5 जा 85. 17 5 जा 85. 17 4 जा 68. 17 5 जा 68. तो ये बचेगा 12. तो 17 7 जा 119. तो आपको मिला कितना? 1 आपको मिला. फिर अगर 1 आप डिवाइड करोगे तो वही हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 17. यानी देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. That means after 16 digit, what can be the maximum number of digit in the repeating block of digits in the expansion, decimal expansion of 1 by 17? It will be after, it will repeat after 16 digits. क्योंकि ये 1 by 17 है, ये 1 by 17 है, इसीलिए एक कम, उससे कम यानी 16 डिजिट के बाद वो रिपीट होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन से जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal. Can you guess what property must it satisfy? यानी जब कोई डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेट होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? फॉर एग्जांपल अगर 5/2 है
तो 5/2 आप देखिए, इसको मैं 2.5 लिख सकता हूँ। 127/5 है तो वो क्या होगा, 5 2 ज़ा 10 होगा, 5 5 ज़ा 25 होगा, फिर 5 2 ज़ा 10 होगा। तो 5 2 ज़ा 10 कैरी टू 5 5 ज़ा 25 और ये होगा 5 4 ज़ा 20, यानी ये 25.4 होगा। ये आप देखिए दिस विल बी 7.26 होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस डेसिमल्स आर टर्मिनेटिंग, ये डेसिमल्स क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो जो भी डेसिमल्स टर्मिनेट हो रहा है उसका Q जो है या तो 2 है या तो 5 है या तो उसका एक्सपेंशन है। 100 को आई कैन राइट दिस 100 एज 250 ज़ा 225 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, यानी इट इज़ ऑफ द टाइप 2⁻² इंटू 5⁻², यानी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ ओनली द पावर्स ऑफ 2 or powers of 5 or both. So if a fraction has to terminate, then the prime factorization of the denominator should be either power of 2, power of 5 or both powers वहाँ पर होना आवश्यक है। That's